Assalamu alaikum, Nazreen. Welcome to another edition of the Cricket World Cup 2023 presented to you by Warriors Channels. और मैं आपका होस्ट अदील रऊफ और मेरे साथ आज जैन वापस स्टूडियोज में मौजूद हैं टू ब्रेक डाउन द फाइनल व्हिच जस्ट हैज एंडेड इन अहमदाबाद। और इसका मैच का अभी तबसरा लेते हैं जैन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम जैन। थैंक यू दिल भाई, थैंक यू। तो मैच जो था वो फर्स्ट इनिंग्स में इस तरह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। इंडिया ने बैटिंग की। इंडिया से दे वुड वांट टू बैट एज वेल अगर वो जीते। शुरू में स्टार्ट अच्छा था, लेकिन रोहित शर्मा की विकेट कैच एक लिया ट्रेविस हेड ने, जो वो गिरे तो श्रेयस अय्यर आए और वो भी कमिंस से जल्दी आउट हो गए। वो तीन विकेटें जब गिरी हैं उसके बाद India looked like a bit difficult to get runs, and they finally managed 240 जो मिड इनिंग्स ब्रेक तक डिस्कस किया था मैंने आतिर के साथ। तो हाउ डिड यू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन इनिंग्स, उसके बाद मैं जाता हूँ सेकंड हाफ पे। ऑलराइट। हाँ, फर्स्ट इनिंग्स में तो वो देखिए, टॉस मुझे लगा था कि जो जीतेगा दे विल बैट फर्स्ट, एंड आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि ऑस्ट्रेलिया ने दे चोज टू बॉल फर्स्ट। आई मीन, टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट डिसीजन। एंड वो जो मैच से पहले हमने बात की थी, जो बैटल होगा स्टार्क एंड हेजलवुड का वर्सेस रोहित शर्मा, इनिशियली रोहित शर्मा लुक्ड टू बी विनिंग दैट बैटल, एंड he continued on as he's always been playing fearless cricket, Yeah, and he yeah. got them off to a flyer. वो शुभमन गिल काफी जल्दी आउट हुआ. I thought it was a cheap wicket to give away, but regardless of that, you have Virat Kohli on the crease. So and Rohit and him, they looked very dangerous. क्योंकि कोहली ने भी आते ही 3 boundaries in a row मारी थी स्टार्क को वो भी. Mm-hmm. तो एंड देन उसके बाद बस द मेन प्रॉब्लम है रोहित के प्ले स्टाइल के साथ कि आई मीन यू हैव टू टेक द रिस्क विद इट. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, एंड आई फील लाइक इट्स अ बिट डिसइनजेन्युअस कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए, बिकॉज दिस इज द सॉर्ट ऑफ अटैकिंग क्रिकेट दैट ब्रॉट देम हियर. सो आई Yeah. मीन जो इनका गेम प्लान था वो उसने एग्जीक्यूट किया, एंड ही गेव देम अ गुड प्लेटफॉर्म. Mm-hmm. And I must say that catch by Travis Head was exceptional. Mm. वो जो इनकी फील्डिंग है ऑस्ट्रेलिया की, throughout the innings, it was काफी just काफी wonderful. रन बचाए उन्होंने। Yeah, yeah. And I'd like to say Pat Cummins जो है, कैप्टेंसी उसकी spot on. मतलब जो bowling changes वो कर रहा था, Mm-hmm. he didn't let the Indian middle order settle. And वो जो कोहली और जब केएल राहुल खेले हैं, तो I felt केएल राहुल was way too slow. Too Mm-hmm. many dot balls, बहुत गंदा strike rate, and उसकी वजह से they just really struggled to get going. और boundary भी उनकी कोई 12 overs हुए थे जिसमें उनकी boundary नहीं थी बीच में. And yeah, it's just वो उसके बाद से कोहली की wicket जो उनकी गिरी है, bit unfortunate, but Pat Cummins again with a crucial breakthrough. Yeah. And then उसके बाद से yeah, they just couldn't salvage anything from there. केएल राहुल ने 66 किया, लेकिन जो लोअर ऑर्डर है वो ज्यादा अचीव नहीं कर सका, इंक्लूडिंग सूर्य कुमार यादव, रविंद्र Hmm. जडेजा, शामी, बुमराह, द रेस्ट, कुलदीप एंड सिराज got out on the last ball by run out. They played their 50 लेकिन 240। तो आई मीन पहले लग रहा था कि विकेट में शायद इट इज नॉट वेरी इजी विकेट टू बैट, स्पेशली पावर प्ले के ओवर्स जब खत्म हो जाए और बॉल बिकम्स अ बिट ओल्ड, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। स्लोइश टाइप ऑफ विकेट है। एंड देन द इनिंग स्टार्टेड विद ऑस्ट्रेलिया, और वो पावर प्ले वाज वेरी वेरी यानी कि एनर्जेटिक पावर प्ले हुआ। Yeah. हाउ वाज दैट? Yeah, पावर प्ले जो है वो तो क्या कहते हैं उसमें, आई थॉट के कमिंग आउट जो है वो इस तरह ही खेलेगी ऑस्ट्रेलिया. एंड क्या कहते हैं, जो जिस तरह का टोटल था उसके बाद जो वार्नर एंड क्या कहते हैं ट्रेविस हेड जो हैं, दे विल गो आफ्टर द बॉलर्स टू स्टार्ट विथ पावर या प्ले में. एंड आई मीन इट इज अ रिस्क बिकॉज यू रिस्क लूजिंग विकेट्स, बट उसमें उनके पास ये फायदा है कि उनकी बैटिंग डीप है. एंड जब डेविड वार्नर आउट हो गया जल्दी, उसके बाद ही आप क्या कहते हैं वो स्टीव स्मिथ कमिंग इन, एंड वो मिचेल जो मार्श, था, मिचेल मार्श ओ सॉरी, का, मिचेल मार्श, या he started तो to hit as well. वो भी या फ्रॉम द ऑफ ही स्टार्टेड टू अटैक.
शामी वो काफी नर्वस लग रहा था. He bowled a bit wide, जो leg side wides थी जो चौके के लिए भी गई हैं. Yep. KL Rahul didn't look very comfortable as well. Yeah, तो extras वो बहुत दे रहे ऑस्ट्रेलिया, थे वो लोग. या वही ऑस्ट्रेलिया की जो मेंटालिटी है, मतलब इतने बड़े स्टेडियम में इतने बड़े एटमॉस्फेयर में दे जस्ट डिडंट लुक फेज्ड, और वो Yep. उन्होंने अटैक किया एट स्टार्ट, एंड देन उसके बाद जब वो उन्होंने स्मिथ की भी विकेट लूज किया, उसके बाद जो दो बैट्समैन थे दे डिसाइडेड कि अब वी विल लॉक डाउन और हमने विकेट नहीं देनी, Mm. एंड उसके बाद नो हाफ चांसेस, नो नथिंग, बस completely took the game away from India. So very Yeah. impressive. Yeah, so 47 for 3, Smith goes out, Bumrah की दो विकेटें होती हैं. That point, India looked like they're very much in the game. और 10 overs पे comparison देखें, 60 for 3, Australia versus 80 for 2, India. लेकिन then Labuschagne and Travis Head, who has played a very superb game as a final, लेकिन a very good tournament. And even though के 4 गेम है वो मिस कर चुका है वर्ल्ड कप की, and he came back in this lineup. And then he did Yeah. not look back और उसने जबरदस्त स्कोर किया आज 100 की है. Yeah. Big props to him, even first in the field and then now with the bat. And the most important thing about him and Labuschagne was that जिस तरह मैंने कहा था KL Rahul too many dot balls, गंदा strike rate, ये उन्होंने एक भी moment पे इस तरह नहीं होने दिया. There was no long stretch without a boundary. They kept attacking. Yeah. And the smartest thing that they did was ये over की पहली ball पे they looked to attack the bowler. So अक्सर शामी को, कुलदीप को, ये या even when Bumrah came on, उसको first ball of the over में they hit him for a boundary, and then आराम से singles ले रहे हैं 5-6 runs per over, and that's all they needed really, actually more than they needed. So So very Labuschagne gets comfortable. a 50, plays an anchor role, head bit more aggressive, gets 137. In the end, got out. लेकिन I think that over Bumrah जिसमें उसमें 14 रन पड़े हैं and he missed the review, which was not out. Yeah. That really finished it, I think, for India. क्योंकि that was their go-to guy coming back, trying to get a wicket. And they had several attempts with Ravindra Mhm. Jadeja in the spin. They didn't, कुछ नहीं हो सका उनसे. And Yeah. I think slowly Australia जो है उन्होंने they just powered ahead. Yeah, I think the due factor, it did become prominent halfway through the innings, and जिस तरह के हमें लग रहा था before the match के spinners will play a crucial part, but ऐसा नहीं हुआ. जडेजा वगैरह they didn't get much from the wicket, Yeah. and वो क्या कहते हैं, वो बुमराह का as you said वो जो umpire review था, it was like a cruel irony because पाकिस्तानियों को भी वो हारिस रऊफ के LBW से काफी हाँ हाँ. हुआ था. That was painful. So this one it went the other way against the Indians, and you felt ke that was the moment to take a wicket, because uske baad se any even wicket uske baad aati to I felt it was too late, and they Yeah. did get a wicket which was purely consolation. Uh, जो 2 runs needed, Travis had um, got out. and Maxwell hit the winning runs and Yeah. 42 overs ish. They finished the game up quite early. Hmm. Steven Smith, Yeah, yeah. the LBW, he could have reviewed because it looked like he was not out. But Yeah, like, first glance पे वो लग रहा था कि I thought he would review definitely, बड़ी yeah. wicket भी थी, but yeah, didn't. Then Australia off to sixth World Cup Championship in the ODI format. 2015 के बाद they've come back, and interestingly they lost the first two games, won 9 in a row, and India beat everybody else by winning 9 in a row in the round robin. And Australia now, the two teams they lost to, they beat them in the semi-finals, South Africa and India, the first game they lost. Yeah, the final. Final though. It's irony and fate. They won 9 in a row now. And they won the Yeah, and cup. all-time great run. I mean, Yeah. वो enemy territory में जाकर Mm. they just silenced the crowd, and Pat Yeah. Cummins जो pre-match जो उसके comments थे, I mean, he Yeah. was on the money. Yeah, Yeah. Yeah. they were very good. So वो जो that, ऐसे फुटबॉल में एक टर्म है फुटबॉल हेरिटेज, कुछ वो जोजे मरीनो ने बोला हुआ है, दिस इज आई फील लाइक क्रिकेट हेरिटेज, ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप. yeah. So they've Yeah. won everywhere and they've won again back on Indian soil subcontinent, second time the World Cup. So Hmm. I mean that's an impressive.
way that they have come back, and some of the players, मैं देख रहा था कि Finch, ये जो है, Travis Head came back very late in the tournament, and Mitchell Marsh had Yeah. to leave the tournament and then come back. और लेकिन फिर भी ही बहुत ज़बरदस्त स्कोर्स किए इन्होंने. Mm-hmm. Maxwell 200 against Afghanistan, Marsh 177 in their final match against Bangladesh, Warner 163 against Pakistan, and today Yeah. 138 by Head in the final. Some really good scores. I mean, you could say कि हर बंदे ने contribute किया है. There's not been like one person who's totally dominated everything. Mitchell, or Yeah. captain, Pat Cummins, good captaincy. He's taken 15 wickets in the tournament. Yeah. Pat Cummins leading from the front. He got the what I feel was the maybe the most important wicket in the match. Virat Kohli, Yeah, 50 पर. Yeah, and क्या कहते हैं, बस वो bowling changes भी मैंने, as I mentioned, बहुत अच्छे थे, and overall the team, वो देखें आप तो, even when I was thinking after the match कि player of the tournament कौन होगा, it was weird because everyone they chipped in and there was no one superstar you could say who carried them, because it was a different person in every match. yeah, So I mean that's admirable and clutch is what I would say. yeah. क्योंकि वो अफगानिस्तान का, I would like to point out, वो जो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स थी, I feel like अगर वो हार जाते and जिस मार्जिन से लग रहा था वो हारेंगे, that Mhm. could have really dampened their confidence, but it just sort of gave them a huge boost Yeah, and yeah. they kicked on. Yeah, and at one point in the tournament, श्रीलंका के जो मैच था उसमें श्रीलंका के ओपनर्स ने 130 कर लिया था. That was the third game after they lost दो मैचेस इकट्ठे Mhm. हार गए थे. थर्ड मैच उन्हें श्रीलंका से खेलना था, लेकिन then they pulled it back. They played it back in the game, और फिर they never looked back after that. और जबरदस्त, यानी कि बहुत ही impressive run है उनका. They won 9 matches in a row against every team in this tournament now, including semi-finals और finals. और we know कि knockout तो उनका जबरदस्त है record. तो Mhm. yeah, Yeah, hats off to them. Well played, India as well, because yeah, they've same thing about their players. Everyone contributed and they've been exceptional throughout the tournament. But yeah, just final match, whoever's better on the day, and we all thought that India was clearly the better side and would pull through. But yeah. yeah, uh, props to Australia. Chale, let's see what happens in the post-match or interviews or मतलब the trophy celebrations, और उसके बाद फिर I will get back in touch with you to have a final reflection of the World Cup. But अभी तक के लिए इतना ही. So thank you very much for coming. Zabardast. ठीक है. Thank you, Adil bhai. All right, Glad to be here. all right. It's been a good run, so thank you very much. Yeah, Shukriya. yeah, for sure. Maaf. No problem. Take care.